हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। पिछली क्लास में हमने आपसे बात की कि रोमांटिक एज में किस तरीके से कई सारे अदर जो चेंजेस होते हैं इंग्लैंड में, उनका कारण होता है फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन का। यानी कि वहां पर जो स्लोगन इस्तेमाल किया गया लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का, कब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में उसका असर दिखता है इंग्लैंड के यानी ब्रिटिश लिटरेचर पर, और उसी का आउटकम होता है 1798 में लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन होना। लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का एक एफर्ट, एक जॉइंट एफर्ट, जहां पर 23 पोएम्स ऐसी आती हैं जो अभी तक के करीब 140 इयर्स के लिटरेचर में नहीं पब्लिश हुई रहती हैं। और यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज ने अपनी पोएम्स में इमोशंस को चुना, अपनी पोएम्स में इंडिविजुअलिज्म को चुना, अपनी इमोशंस में उन्होंने फीलिंग्स के बारे में बातें की और कॉमन मैन को रिप्रेजेंट किया। अभी तक का जो लिटरेचर था वो गवर्न था एलीट क्लास से, हीरोइक कपलेट से, और कई सारे ऐसे फीचर्स जो प्यूरिटन्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही थे। In my today's lecture, I am going to tell you about William Wordsworth. Yes, William Wordsworth, the representative poet of Romantic age. Romantic age. What actually the Romantic age is? I have told you already that it is a kind of world, romantic world, which romantic authors created for themselves. For these authors, this very world was a realistic world. But for us, for common people like us, it was a kind of romantic world. And why they escaped from reality of this world? Because the reality of this world is full of grief, sorrow. That's why they remained in a world where they considered the reality that was there was of their lives too. And here we have William Wordsworth. William Wordsworth, for whom Matthew Arnold in his famous poem, remember the poem Memorial Verses. The poem's name is Memorial Verses. It is a poem in which Matthew Arnold has told about three authors. Three authors. Who are these authors? First of all, he talks about Goethe, and on the other hand, he talks about Byron, and finally, he talks about William Wordsworth. About William Wordsworth, Matthew Arnold has told us that the previous two authors, Goethe and Byron, taught us how to be strong in the time of problems. But William Wordsworth, he told us how to remove these problems. The depiction of nature in the poetry of William Wordsworth was such a soothing creation that human beings felt nature around us. There were the droplets of water on their face in the form of rain. There were forests before them. There was greenery everywhere. Wherever they looked, they got nature in a different form, and it became possible because of William Wordsworth, because he created beauty in such a way that can be compared with an aesthetic pleasure of that time of Romantic age. It was ignored. This concept was even ignored before it. Even after the passing of 1500, 1600 years, no authors paid attention on it. But there was Wordsworth, who became a pantheist. Remember the word, who became a pantheist. Wordsworth's nature of pantheism. Wordsworth's pantheism of nature. The question is always asked because he saw nature as an educator who can teach us, who can show us the way that what actually the right path of our life, and this life must be full of feelings and sensitivity. William Wordsworth, for whom Matthew Arnold later in his poem Memorial Verses requests Rotha River
to keep fresh the grass upon the William Wordsworth's grave alive. To keep remain these grasses fresh, and it can be done, it could be done only by Rotha river, who passes beside the Wordsworth's grave. Because Matthew Arnold said that the person who heard the voice of Rotha, the person who always sang for Rotha, is no more. But now it's your turn. But now it's a turn to Rotha river to pay whatever you have got when Wordsworth was alive. William Wordsworth, about his definition of poetry, says that poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin emotions recollected in tranquility. Remember the word emotions recollected in tranquility. Emotions recollected in tranquility. Later, by some critics, even T.S. Eliot criticized this concept. For T.S. Eliot, poetry was not an expression of personality, but instead of it, poetry was an escape from personality. He criticized Wordsworth, but in reality, Wordsworth's definition of poetry was quite good and understanding. Why? He said that emotions recollected in tranquility means poetry, according to William Wordsworth, was like a recall of previous things. In his poems, usually we see that he has visited some place, and after his visit, after the completion of this visit, he is sitting alone somewhere and now recalling the happenings that were there with Wordsworth. For example, take the example of Tintern Abbey. Wordsworth visited the place Tintern Abbey in 1793. And when he revisited the place, because in the beginning of this poem, he writes that 5 years have passed. 5 years have passed. यानी कि 5 साल गुजर गए हैं और फिर से वर्ड्सवर्थ उस जगह पर पहुंचे हुए हैं. And now he is seeing the beauty of Tintern Abbey and becomes overjoyed after seeing it. And he writes many things. He's saying that there's a place from where there's hermits cave, where we see that the smoke is rising from that place. Nature did never betray the heart that loved her. His famous poem Daffodils, where Wordsworth writes about the yellow flower that he sees vast in number there. Wordsworth, in a very, lucid way, has described the beauty of daffodils flowers. I wandered lonely as a cloud. There's a famous novel. A novel is by Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri. She is the woman who got the Pulitzer Prize of the year 2000 for her work Interpreter of Melodies. Interpreter of Melodies. In the year 2000, he got the Pulitzer Prize of Interpreter of Melodies. And she has written one more novel, and that is The Namesake. Jhumpa Lahiri's novel, The Namesake. Namesake. There, the heroine of the novel has been visited by her in-laws, who are there to see that what kind of bride she is, as according to Indian custom and traditions. The persons who belong to the groom side, bridegroom side, they go
to bride's place and see her and checks her on different parameters that whether are you eligible to become the wife of my son or not. And the father-in-law of the heroine asks her to recite a poem. कोई सुनाओ एक कविता. And the heroine starts reciting the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on over vales and hills, and all at once I saw a crowd. She has uttered these words only then. The father-in-law became very happy and got up in excitement and said, "A host of golden daffodils." He became so happy on the literary genius of that girl that he accepted her as her daughter-in-law. And later, the hero and heroine were married. It's a very fantastic novel, The Namesake. It also has been adapted in cinematography. And Tabbu and Irfan Khan have acted in this movie. If you ever get the opportunity, kindly watch this movie and see the creation of Jhumpa Lahiri. That how, remaining such a far in the country, United States of America, she is writing about Indian traditions. A Bengali family now shifted to America, US. I wandered lonely as a cloud that floats on over vales and hills, and all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Later in the poem, Wordsworth says, "For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils." यानी कि जब भी मैं अकेले तन्हा बैठता हूं अपने यहां मेरे कमरे पर, तो क्या होता है, वो जो फूल हैं वो क्या होते हैं, वो मुझको याद आते हैं इस तरीके से. और क्या होता है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. और फूल जो होते हैं इस तरीके से इनवर्ड आई में फ्लैश होते हैं, जैसे क्या हो, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हो ये, और मेरा दिल झूम जाता है. जैसे कि क्या हुआ था, अली जाफर के गाने से आपका दिल झूम गया. मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, नदिया में नालों में, और बेहतरीन गाना है वो. उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ का दिल क्या हो गया, झूम गया एकदम से जब वो डैफोडिल्स को याद करते हैं. He was born in 1770 and his life was very long. He died in 1850, becoming a poet laureate. And there's a famous author who has said about him that for a handful of silver he left us. Why? Because Wordsworth was made poet laureate in 1843. So here I am going to tell you the certain incidents of Wordsworth's life, and will tell you that why Wordsworth is Wordsworth. What about his personal life? I will try to put all these things in my lecture. So now, once again, you are welcome in this lecture that is based on William Wordsworth. 7th April 1770 and 23rd April 1850. This was his lifelong career. So now it was in 1797 that the new romantic movement in our literature assumed definite form. यानी कि 1797 में रोमांटिक मूवमेंट में हमारा जो लिटरेचर है वो क्या हुआ, एक डेफिनेट फॉर्म में आता है. और क्यों? क्योंकि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज रिटायर्ड, मींस दे सेटल्ड. It is not about superannuation. The retirements, they visited the place to the Quantuck Hills. यहां पर वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जाके बैठते हैं सॉमरसेट में जो है, and there form the deliberate purpose to make literature adapted to interest mankind permanently. Means उनका जो पर्पस था वो ये था कि हम ऐसा लिटरेचर क्रिएट करने वाले हैं जो कि किसके लिए होगा, इंटरेस्ट मैनकाइंड परमानेंटली, इंसान के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा. और था भी ऐसे ही. रोमांटिसिज्म हैज some other features, some others
meaning to, and what they are. Getting romantic is too good, or we can say it is good, but sometimes you are shown the mirror of reality. वास्तविकता जो है वो आपको ला ही देती है. कितना भी आप इमेजिनेशन कर लीजिए कुछ चीजों को लेकर के, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं. और इसीलिए ये जो फिलॉसफी थी, ये जो दर्शन था रोमांटिसिज्म का, महज 34 ईयर्स तक चलता है, फिर खत्म सब. All the romantic thoughts and imaginings were settled down. But why? Even today, people read this literature because it has shifted in their mind permanently. We want to escape from this world which is full of pangs, sorrows, dilemma, frustration, anxiety, everything, where nobody has the right option to choose. There were famous stories written after First or Second World War where people opted. They were suffering from hallucination, and in this hallucination they had created a place in their mind. This famous story, the third level in intermediate syllabus. There you will see Charlie, who is suffering from hallucination, is gone to the third level, which don't exactly exist. He's remembering the past, old days, where everything was good, when people had time for each other, when life was not so mechanic, when people trusted each other, when they had time to share their sarbat with each other, and the women also were gorgeous, or we can say women were very sensitive at that time. Charlie frequently visits at that place in his mind, and the most interesting part of this story is that his friend, his psychologist, his psychiatrist friend also reaches there, because in his treatment he also becomes mad, he also becomes he also starts suffering from hallucination. So that's why this world matters a lot. So they wanted to produce a literature where they had the purpose to remain these things, to make these things that may settle down in the human minds permanently. And again, देखिए, which they declared classic poetry could never do. Classic poetry could never do. What does it mean? The poetry of neoclassical age, which was full of rationality, wit, humor, satire, criticism, elite concept. Classic poetry was failed. Classic poetry was unable to get settled in the heart of human beings. It was just in the mind of people. And those things that are in the mind of people are are such bad that they pass after a long time, after after a very short time. They didn't exist there permanently. And the relationship which is built on the basis of bindedness, that yes, that's the right person for me, because I expected whatever he is, that he is similar to that, but not the real mingling is of heart. And when you are connected with your heart, that's why the relationship has become very fragile in this age. So they wanted to produce a literature that may soothe them when they are alone, when they are feeling very, kind of dilemma, when they are in anxiety. So helping the two poets was Wordsworth's sister, और इन दोनों लोगों की मदद करने के लिए कौन था? वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी, with a woman's love in flowers and all beautiful things. एक ऐसी महिला जो फूलों से प्यार कर रही है और सारी खूबसूरत चीजों से.
She's not in the love of Domino's, Pizza, Burgers, Pizza Hut, whatever. She doesn't love shopping. Yes, it may be the hobby of many women, but sometimes when you are close to nature, when your heart has the aspiration that sometimes I may meet a heifer, a calf, बछड़े से मुझे मेरी मुलाकात होगी, and I will keep her or him in my lap and make love. So imagine that heart which is so pure, that purity rests, and this purity becomes a boon for her. So there was Dorothy, sister of Wordsworth, who was with them and accompanied with them on several places, even Tinton Abbey. Even in Tinton Abbey also, Dorothy is with his brother, and Wordsworth says her that, my dear sister, I will read this poem for you. There's lines something like that. I don't remember this time. Sorry. So here was Dorothy with them, and all beautiful things and a woman's डिवाइन सिंपथी. एक महिला जिसके पास क्या डिवाइन सिंपथी है, वो देवी है. अपने कर्मों से, उसकी ही एनकरेजमेंट से, अपने भाई के एनकरेजमेंट से लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन होता है. वर्ड्सवर्थ डिडंट नीड पोएटिक इंस्पिरेशन बिकॉज हिज पोएटिक इंस्पिरेशन वाज ऑलवेज विद हिम in the form of his sister Dorothy. That's why Wordsworth is Wordsworth. So now let's come to the point. In Tennyson words, Tennyson का कहना है क्या, Wordsworth uttered nothing base. And so no, very marvelous words that Tennyson has used for Wordsworth, कि कुछ भी घटिया उनके जुबान से कभी नहीं निकला. समझ रहे हैं? वो ऐसा आदमी था जिसने कभी भी कोई ट्रिवियल बातें नहीं की. यहां पे देखिए क्या है, द सेकंड ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ के पिताजी का भी नाम वर्ड्सवर्थ ही था. और क्या हो रहा है, वो दूसरे बच्चे थे अपने पिताजी के. एंड एन कुक्सन, ये उनकी मां का नाम था. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770. 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था. आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मदर, वर्ड्सवर्थ की मां की डेथ के बाद, इन 1778 1778 में हिज फादर सेंट हिम टू हॉक्सेड ग्रामर स्कूल. हॉक्सेड ग्रामर स्कूल इन लैंकनशायर, नाउ इन कम्ब्रिया. नाउ इन कम्ब्रिया. और इसी वजह से कम्ब्रिया को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और इनको लेक ऑथर भी कहा जाता है. मैं बताऊंगा आपको भी आगे. एंड सेंट डोरोथी टू लिव विद द रिलेटिव्स. और डोरोथी को इन्होंने भेज दिया कि तुम क्या करो, तुम जा करके अपने रिलेटिव्स के साथ में तुम्हें रहना है. इन यॉर्कशायर. कहां पर? यॉर्कशायर में. सी एंड विलियम डिड नॉट मीट अगेन फॉर 9 years. भाई और बहन 9 साल तक अलग रहे. इसके बाद नहीं मुलाकात हुई दोनों की. 9 सालों तक वो एक दूसरे से अलग रहते हैं. अब देखिए, हिज लॉन्ग एंड अनइवेंटफुल लाइफ डिवाइड्स इटसेल्फ नेचुरली इनटू 4 पीरियड. 4 पीरियड में इनकी जिंदगी जो है वो डिवाइडेड है. कौन कौन सा देखिए, 1770 से 1787, यानी 17 साल का इनका टाइम जो है इन द कम्बरलैंड हिल्स. कहां पर? कम्बरलैंड हिल्स में. 1787 से 1797, 10 साल का समय. अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का दौर. ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तूफानों का दौर, तनाव का दौर. और यही वो दौर था जब वर्ड्सवर्थ कहां पर गए थे? फ्रांस भी गए. And he became very impressive. He became impressed with the revolutionary ideas of that time. France at that time was seeing the French Revolution, and Wordsworth became very impressed of this phenomena. So here see, period of uncertainty, of storm and stress, including his university life at Cambridge. यहां तक कि उनकी जो लाइफ है कैम्ब्रिज में, उसको भी लेकर के हिज ट्रेवल्स अब्रॉड. अब्रॉड क्या? फ्रांस गए. वहां पर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इतना प्रभावित हुए कि अपने आप को उसका एक हिस्सा मानने लगे थे. लेकिन एक समय ऐसा आया कि लुई 14 का एग्जीक्यूशन जब होता है और स्लेव
को फिर से, स्लेवरी को फिर से लीगल किया जाना नेपोलियन बोनापार्ट के दौरान, इनको ये दो इंसिडेंट थे इनकी लाइफ के जिनसे ये अपने आप को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अलग देखने लगे थे। यानी अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था दैट ही स्टार्ट्स hating writers like Byron and P.B. Shelley who talked about revolutionary ideas in their poems. आगे देखिए, and this revolutionary experience in this period in November 1791, 1791 में ही वर्ड्सवर्थ visited revolutionary France. वर्ड्सवर्थ कहां जाते हैं? रिवोल्यूशनरी फ्रांस में, and became enchanted with the Republican movement, और प्रभावित हो गए रिपब्लिकन मूवमेंट से जो कि वहां फ्रांस में चल रहा था। He fell in love, और यही दौर था जब वो प्यार में हो गए किसके? With a woman, एक महिला, एनेटी वैलोन। एनेटी वैलोन से who in 1792, जिसने 1792 में gave birth to the daughter कैरोलिन, वर्ड्सवर्थ की बच्ची कैरोलिन को जन्म दिया। लूसी पोएम का मानना है, लूसी पोएम्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ की उसी को लेकर के हैं, बच्ची को ही लेकर के, कैरोलिन। लेकिन शादी नहीं हो पाती है एनेटी वैलोन से विलियम वर्ड्सवर्थ की, क्योंकि उस समय ऐसे स्थिति हो जाती है इंग्लैंड और फ्रांस के रिश्तों में कि वर्ड्सवर्थ को अकेले वापस आना पड़ता है। और आपको ये जान करके सरप्राइज होगा, आश्चर्यचकित होंगे आपको कि करीब आगे चल करके 7-8 साल तक वर्ड्सवर्थ को समय नहीं मिला कि वो फ्रांस जाएं और अपने प्यार एनेटी वैलोन से या अपनी बेटी कैरोलिन से मिल सकें। रिश्ते ऐसे आए, रिश्ते इस तरीके से बने कि वहां पर जब इनकी दूसरी शादी होने की बात हुई तब उस महिला ने इनसे कहा कि आप जा करके पहले तो एनेटी वैलोन से आप इस बात की जो है अप्रूवमेंट लेकर के आइए, तब मैं आपसे शादी करूंगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार मिला। सोचिए, वर्ड्सवर्थ, एनेटी वैलोन इतने सालों तक अकेली रह रही हैं बेटी को लेकर के अपने, और आगे चल करके वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ आने वाली हैं मैरी हचिंसन नाम है शायद उनका मेरे ख्याल से, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के कहा कि आप कैरोलिन के लिए कुछ करिए, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर कैरोलिन। और वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेटी कैरोलिन के लिए, जब उस शादी का टाइम आया 1816 के आसपास का दौर, 1816 के आसपास, तो एक अच्छा खासा अमाउंट फिक्स कर दिया अपनी बेटी के लिए कि हर साल तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड स्वीट। वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस जाते हैं तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके समुद्र के किनारे चल रहे हैं। वो सोचिए कितना वो इमोशन से भरा दौर होगा कि 7 सालों तक बेटी को देखा नहीं है, आज देख रहे हैं बेटी को और हाथ पकड़ के उसका समुद्र के किनारे चल रहे हैं। क्या होगी वर्ड्सवर्थ की फीलिंग उस समय? आइए देखते हैं। डियर डॉटर कैरोलिन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ब्रिटेन्स टेंस रिलेशनशिप विद फ्रांस फोर्स्ड हिम टू रिटर्न टू इंग्लैंड। यानी फ्रांस की वित्तीय जो स्थिति थी, समझ रहे हैं, और क्या जो इसका संबंध था इंग्लैंड के साथ में, अलोन द फॉलोइंग ईयर, क्या हुआ? इंग्लैंड अलोन द फॉलोइंग ईयर। वर्ड्सवर्थ क्या हुए इससे? वो जो है लौटे अकेले ही अगले साल विद द पीस ऑफ एमीन्स, शांति का संबंध हुआ, प्रस्ताव हुआ, अगेन अलाउिंग ट्रेवल टू फ्रांस इन 1802। फिर से क्या हुआ? वर्ड्सवर्थ 1802 में वापस जाते हैं फ्रांस। वर्ड्सवर्थ एंड सिस्टर डोरोथी, वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी विजिटेड एनेटी वैलोन एंड कैरोलिन, वर्ड्सवर्थ की बच्ची, इन कलाय। कहां पर? कलाय जगह में रह रहे हैं। द पर्पज ऑफ दिस विजिट वाज टू प्रिपेयर एनेटी वैलोन फॉर द फैक्ट ऑफ हिज फोर्थकमिंग मैरिज टू मैरी हचिंसन। यानी मैरी हचिंसन से उनकी शादी होनी है, बट ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ एनेटी वैलोन दैट आई एम गोइंग टू मैरी विद अनदर वुमन। Do you agree with it or not? Eneटी वैलोन allowed him to marry Hutchinson. देखिए, afterwards, उसके बाद he wrote the sonnet. It is a beauteous evening, calm and free. It is a beauteous evening, calm and free. इसको वर्ड्सवर्थ अपनी बच्ची की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं समुद्र पे।
और वो उसको लिख रहे हैं पोयम को, रिकॉलिंग अ सी साइड वॉक विद द 9-year-old कैरोलिन। 9 साल की बच्ची है कैरोलिन की बेटी, और उसके साथ वो whom he had never seen, जिसको इन्होंने देखा भी नहीं था कभी। सोचिए आप कितना वो एक इमोशनल मोमेंट होगा बिफोर दैट विजिट, यानी इसके पहले उन्होंने उसको देखा भी नहीं था। ऑन द सेइंग ऑफ मैरी वर्ड्सवर्थ, मैरी वर्ड्सवर्थ कहने पर सेटल्ड 30 पाउंड अ ईयर ऑन कैरोलिन। ठीक है, वर्ड्सवर्थ सेटल्ड, इन्होंने क्या किया, 30 पाउंड अ ईयर ऑन कैरोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज इन 1816। 1816 में जब शादी की उसके बात आई तो उन्होंने इतना पैसा क्या किया, जो है सेट कर दिया, किसके लिए, कैरोलिन के लिए। 1797 to 99, a short but significant period of finding himself and his work, and this was the time when Wordsworth wrote lyrical ballads, and this was the time when S.T. Coleridge became an intimate friend of William Wordsworth. Wordsworth met S.T. Coleridge in 1795, and in 1797 he became a close friend of William Wordsworth. 1799 to 1850 अगला दौर, a long period of retirement in the northern lake region। कहां पर, नॉर्दर्न लेक रीजन में, where he was born, जहां पर पैदा थे, and where for full half century, यानी कि आधे लगभग सदियों, शताब्दी तक, 50 सालों तक, he lived so close to nature, वो प्रकृति के एकदम से करीब रहे, that her influence is reflected in all his poetry, कि उनका प्रभाव उस समय की हर पोइट्री में जो है इसका दिखता है। आगे देखिए, he had taken care of a young friend Wesley Calvert, इन्होंने क्या ध्यान रखा था, किसका, Wesley Calvert का, who died of consumption, उनकी मौत कंजम्पशन से हो जाती है, and left Wordsworth hire to a few hundred pounds, कुछ 100 पाउंड वो वर्ड्सवर्थ के लिए छोड़ गए, एंड टू द रिक्वेस्ट, और कसम खिलवाई, रिक्वेस्ट किया, दैट ही शुड गिव हिज लाइफ टू पोएट्री, कि तुम अपनी जिंदगी पोएट्री को ही दोगे। यू हैव टू कंपोज पोएम्स इन योर एंटायर लाइफ, टेक दिस वो एंड आई विल डाई। एंड ही वॉज Wesley Calvert who made Wordsworth. He became a Tory. He was influenced by the Tories and soon accepted the office of a distributor of stamps. Distributor of stamps में आए, and after the death of Robert Southey in 1843, 1843 में जब रॉबर्ट सदी की डेथ हो गई, was appointed poet laureate by the government, सरकार को इनके टोरी होने का रिवार्ड मिला, सरकार ने दिया इनको, और ये क्या हो गए, पोएट लॉरिएट, which occasioned Robert Browning, the famous poet of Victorian age, an optimistic poet, famous but ill considered poem of The Lost Reader. What's the name of the poem? The Lost Reader में ब्राउनिंग इनको कहा है, just for a handful of silver he left us, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat। समझ रहे हैं कि थोड़े से पैसे के लिए ना उसने अपना जमीर बेच दिया। ये एक ब्राउनिंग का एक्टर सटायर था वर्ड्सवर्थ को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड 2 trips to France in 1790 and 1791। समझ रहे हैं, 2 बार ये फ्रांस जाते हैं। In his second visit he joined the Girondists, ठीक है, इनसे मिलते हैं वो, और the moderate republicans, या क्या थे ये, moderate republicans थे। His relatives stopped his fellowship, और इसके कारण उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इनकी फेलोशिप को बंद कर दिया, and he returned England, और वो इंग्लैंड वापस आ गए। The execution of Louis 16th, वहां भी मैंने Louis 14 कह दिया था, 16th है, तो लुई 16 का एग्जीक्यूशन एंड राइज ऑफ नेपोलियन अलोंग विद स्लेव ऑक्यूपेशन, यानी जो है ये व्यवसाय के साथ में गुलामों के, सप्रेस्ड हिज इंथुजियाज्म, उनका जो क्या होता था, इंथुजियाज्म था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो उनका पोएम है, ब्लिस इट वाज टू बी डॉन टू बी अलाइव, हिज इंथुजियाज्म वाज नाउ सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ 2 things, फर्स्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड सेकंड the occupation of slave, again made intact by
by Napoleon Bonaparte. So here his coolness grew to disgust. धीरे धीरे उनकी जो coolness थी, यानी जो उनका जो नेचर था इस तरीके का शांत वाला, वो डिस्गस्टिंग में बदल गया. And due to this he started censoring poets like Shelley and Byron. और Shelley और Byron जैसे poets को, जिनकी कैसी थी विचारधारा, रिवोल्यूशनरी, उसको उन्होंने सेंसर कर दिया. And became the friend to Scott. Scott means Walter Scott. S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge made the acquaintance of William Wordsworth and his sister Dorothy. ठीक है, इनसे इनका परिचय हुआ. In Somerset in 1795, 1795 में. The years between 1797 and 1800 mark the period of Wordsworth. यानी ये जो दौर है of and Coleridge close collaboration, यानी ये जो ईयर है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कोलैबोरेशन को रिमाइंड कराता है. एंड ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ मैच्योर पोएटिक करियर. और यही दौर था जब वर्ड्सवर्थ का मैच्योर पोएटिक करियर भी शुरू होता है. वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री. वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री as propounded in the preface is important and has to be quoted of length that. सोचिए क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. यानी वर्ड्सवर्थ का कहना है कि क्या है, ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, नेचुरल धारा प्रवाह चीजें होती हैं ये क्या फीलिंग, और कौन सी पावरफुल फीलिंग्स, जब आपकी भावनाएं क्या हो जाएं, पावरफुल हो जाएं. और इसका उद्गम कहां से होता है, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. जब आपकी भावनाएं जो है फिर से रिकलेक्ट हो, फिर से आपको दोबारा याद आए, जब आप कहां पर हो, ट्रैंक्विलिटी में हो, यानी कि अकेले आप बैठे हैं और आप याद कर रहे हैं कि आप इस जगह पर गए हुए थे तो ऐसी चीजें थी, मैं अपने भाइयों के साथ में था, मैं अपनी बहनों के साथ में था, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ में था, या मैं इनके साथ में था, और ऐसा जगह थी, ऐसी जगह थी, क्या वो दिन थे. अब आगे देखिए. सदी वॉज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ कॉलरिज. जैसा कि सदी क्या थे, वो एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, किसके, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के. तीनों दोस्त थे. ऑल टुगेदर वर कॉल्ड लेक पोएट्स. तो तीनों को क्या कहा जाता है साथ में, लेक पोएट्स. आगे बढ़ते हैं, मेजर वर्क्स पे देखते हैं क्या क्या हैं. लिरिकल बैलेट्स. This collaborative collection by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge was published anonymously. कैसे पब्लिश हुआ, anonymously यानी बगैर किसी नाम के, in 1798, 1798. And I'm going to tell you that this collection was taken very badly by the public. Public became very angry that what kind of poetry you are writing about. You are writing about common men, you are writing about feelings, you are writing about emotions and individualism, and that is not fair. The entire generation was now dominated by the feeling of wit, rationality, due to the neoclassical characteristics. But now they had published a collection where they talked about those elements which were a kind of new imaginings. That's why public did not accept it as Wordsworth and Coleridge had expected. So Wordsworth wrote another edition, and later in his edition he added a preface. Remember the word preface, to convince the readers that what is the purpose of this poetry. And in this very preface he wrote his famous definition of poetry too. This edition appeared in 1800. So Coleridge was published in 1798. The majority of the 23 contributions were by Wordsworth. यानी 23 पोएम्स में ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो 19 पोएम्स की वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी. एंड इंक्लूडेड कौन कौन सी, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिंटरनबी कहते हैं, वो पोएम लिखी गई. द थॉर्न ये पोएम है. एंड द इडियट बॉय. इडियट बॉय ऐसा लड़का है जो बेवकूफ है, लेकिन माँ उसकी बार बार अपने बेटे को भेज रही है अपनी दवा के लिए, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान है. द इडियट बॉय. ऐसी पोएम्स पब्लिश की गई किसके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा. ठीक है, मतलब ये 3-4 फेमस है उनकी हैं, और भी है वहां पे. कॉलरिज पोएम 4, कॉलरिज ने 4 को लिखा. द मोस्ट फेमस बीइंग द राइम ऑफ द एंशिएंट
मरीनर, और उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जो कि एक बैलेड है, और इसीलिए इस कलेक्शन का नाम भी लिरिकल बैलेड्स था। लेकिन वर्ड्सवर्थ को, सॉरी, कॉलरिज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और लोगों ने भी इस कलेक्शन को बहुत बुरी तरीके से लिया, क्योंकि ये वही रीजन था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर का सबसे ऊपर होना। घोस्ट के बारे में बात करना, भूतों के बारे में, ये कैसी पोएट्री है भाई? इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने बाद में अगले एडिशन में इस पोयम को 1 नंबर से हटा करके 23 पे कर दिया। देखिए, ही प्रोवाइडेड एन एडिशनल पोयम फॉर द सेकंड, ठीक है, यानी दूसरे जो है वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम एडिशन, बट ओनली वर्ड्सवर्थ्स नेम फीचर्ड ऑन द टाइटल पेज। लेकिन अगले 1800 वाले कलेक्शन में क्या हुआ? वर्ड्सवर्थ का नाम ही टाइटल पेज पर आया, बस। और कौन सी फेमस पोएम्स हैं? साइमन ली, वी आर 7 लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोर्टुलेशन एंड रिप्लाई, समझ रहे हैं? द टेबल्स टर्न्ड, द थॉर्न, फेमस पोएम्स हैं, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना, एक एक पोएम को मैं डील करूंगा। लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी, समझ रहे हैं? उसके बाद आता है लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स, ये कलेक्शन आया 1800 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, प्रीफेस जोड़ दिया गया इस बार, किसके साथ में? लिरिकल बैलेड्स के साथ में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द ट्रॉडन वेज, 3 years सी ग्रू अ स्लम्बर, ये सारा 3 और 2 आगे एक ही पोयम के कलेक्शन के हैं। सी और कौन सी है? लूसी पोयम्स हैं वो। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आगे आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, समझ रहे हैं? ऊपर की 4 थी, ये एक है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। लूसी ग्रे, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, नटिंग, द रुइंड कॉटेज, माइकल, फेमस पोयम। माइकल है बेचारा, बच्चे उससे चले गए हैं बाहर, एक झोपड़ी है और बार बार झोपड़ी गिरी जा रही है, माइकल अकेले उसको बना रहा है। आई विल टीच यू ऑल पोएम्स, दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। So here Michael, the kitten at play, the kitten at play, and poems in 2 volumes. This collection appeared in 1807, where resolution and independence, I wandered lonely as a cloud, also known as daffodils, इसी की मैं बताया हूं आपको। My heart leaps up, ode, intimations of immortality, जहां पर उन्होंने बात की किसका अपना कॉन्सेप्ट कि बच्चा जो है वो जन्म लेने से पहले एक कंसिडरेट जिंदगी को जिया हुआ है। फेमस लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन हेवन में, और जब यहां पर वो जन्म लेता है, ठीक है, इस दुनिया में, तो क्या होता है? वो अपने उस जन्म को, उस समय को जो उसने हेवन में जिया हुआ है, याद करके वो मुस्कुराता है। यही रीजन है उसकी स्माइल का। लेकिन धीरे धीरे मां के लाड़ प्यार, पिता की पैम्परिंग ने उस बच्चे को वो दुनिया भुला दी, और वो धीरे धीरे करके वास्तविकता से रूबरू होने लगता है और दुखी होने लगता है इस दुनिया से। ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, आई विल टीच यू। ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, फेमस पोयम, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, द सॉलिटरी रीपर एंड एलेजाइक स्टैंजास, composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802, London 1802, famous poem. The world is too much with us, late or soon, the famous 2 gods. I will tell you about them. Other works, French Revolution 1810, Guide to the Lakes 1810. I have taken the names of these poems from Wikipedia, I'm telling you. To the Cuckoo, The Excursion 1814, Laodamia 1815, 1845, The White Doe of Rillstone 1815, and Peter Bell, the famous poem of a story. This is the story of a donkey and his master who has died. Peter Bell was a ruffian and nature gave him many indications, but it could never make his heart changed. But finally, when he sees that there's a donkey who is crying on the death of his master, his heart metamorphosized, seeing this, and becomes a good man. Ecclesiastical Sonnets 1822, The Prelude 1850, famous poem of his personal life. So this was all about William Wordsworth that I have taught today. In a very short span of time, I tried to deal
the basic elements of William Wordsworth's life and what was the connection of his from romantic age. His life and his career in Cambridge, his friendship with Coleridge, and how Dorothy, his sister, became an inspiration of his poems, and how, inspired from French Revolution, he wrote many poems, but finally he started hating this concept and this phenomena, and not even this phenomena, but he started disgusting authors like P.B. Shelley and Byron. He went to France in 1791 and fell in love with a girl, Annette Vallon, but due to the tough relationship with England and France, he had to return again in England. And when in 1802 he visited there, and the purpose of his visit was to convince Annette Vallon for his marriage with Mary Hutchinson. It was Mary Hutchinson who encouraged Wordsworth to set some amount of money for his illegitimate or his daughter. We must not use the word illegitimate for Caroline, and Wordsworth set a good money, a handsome money for her career and for her life. The famous poem Matthew Arnold's Memorial Verses tells about the poetry of Wordsworth and what actually he was for the human beings in this world. He was Wordsworth because he made you feel. He told you that how to live with emotions. His personal life, was very he was a very disturbed person. And it is an interesting fact that his parents hated him most. But how his heart was transformed. And with his sister, he wrote the masterpieces. Wordsworth is a person who has written most number of sonnets in English literature. Even he surpasses William Shakespeare. He has written approximately 500 sonnets in his entire career. 500 सॉनेट से भी ज्यादा उन्होंने लिखे हुए हैं पेट्रार्कन सॉनेट फॉर्म में. So this was a small class about William Wordsworth. Later in upcoming days, my intention as Jack Sparrow in his famous movie Pirates of the Caribbean said that my intention is to take my ship beyond any limit. So I am here also with the same purpose, that I will ship this caravan. I will carry this caravan beyond any limit. So remain with me and keep watching the videos. Thank you so much for watching. Have a good day. कैसी लगी वीडियो आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा.